So we were doing change of trim due to change of density, and in that we were doing case number 1. And case number 1 deals with going from Chennai to Haldia, that is seawater to river water. And as per that, what we discussed was vessel will have a trimming moment by head. Trimming moment will be by head. And we derived the formula for trim change, TC, and the formula was W into FB upon MCTC, bracket open, rho S minus rho R divided by Rho S. This was the formula which we derived. And this trim change will be by head. And therefore then the TA we calculated to be TC into LCF upon LBP and TF will be equal to TC minus TA. Now, so this is what we had discussed yesterday. Any doubts in this so far? All right. So I'm moving on from this stage now. So we have decided that the vessel will go down by head, trimming moment will be by head, and the TC will be by head. If this is got to be by head, the trimming moment and the TC, can you tell me when I do my drafts calculation, what will be the sign that I will put for TF? सर TF का माइनस होगा, TA का प्लस होगा. सॉरी, TA का माइनस होगा, ऐड होगा, में जाएगा सर. माइनस करेंगे सर. ठीक है, इसमें गलती मत करना प्लीज. यस सर. बड़ी कॉमन मिस्टेक है ये, तो बड़े लोग लुट जाते हैं इसमें. तो जो TF का साइन है ये प्लस होगा और TA का साइन माइनस होगा. Does everybody agree on this for this sign? Yes, sir. तो मेरा TF प्लस होगा और TA माइनस होगा. एंड देयरफॉर मेरे ड्राफ्ट्स में कैलकुलेट कर लूंगा. अच्छा, अब this is assuming my LCF is aft of midship, because this is basis the assumption कि मेरे जहाज की जो शेप है वो इस तरीके की है कि आई एम वाइड बॉडीड आफ्ट, which I normally am, and narrow forward. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. So this is as per my normal scenario, and as per that normal scenario,
My LCF is aft of midship. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm calling this as case number 1 alpha. And case number 1 alpha, this is a normal scenario. LCF is aft of is less than midship. Supposing my LCF was forward of midship, my turning moment would have been ulta. Yes, sir. So my turning moment would have been by stern. Formula would have remained the same. Everything would have remained the same. TC would have been by head, by stern, sorry. Agreed? What would have happened to my TF and TA signs? TF minus TA plus. TF minus TA plus. Formulas remain the same. My signs would have become like this. This is my case number 1. Please note, I am going from C, S. Please note, my density in denominator is S. So this is my initial density. Denominator is carrying my initial density. Going to case number 2. River water to sea water. Doing part A. Initial is R. So my formula for TC will be the same. No change in my formula. Only thing which will change is my density in the denominator. My initial density is R. So rho R. Is this okay? And since I'm going from river water to sea water, there will be a mean rise happening. So this will go by stern. If this goes by stern,
the sign of my TF will be minus. Because I'm going down by stern, my TA will be plus. This is my case number 2A. In case number 2B, it will be exactly opposite of case A. So this will go by head. By head. Since I'm going by head, so the sign of TF will be plus, and the sign of TA will be minus. So this completes your case number 2. River water to sea water. Chennai to Haldia. Haldia, sorry, my mistake. Haldia to Chennai. So if I sail out from Haldia to Chennai on my normal case, normal my vessel, your vessel, LCF is aft of midship. I will trim by stern. I will have a trimming moment and trim change by stern. If I am going to go down by stern, my TA will be plus. TF will be minus. Denominator will have a density of R initial. So I now combine case 1A and 2A together and make one formula. TC. This is a combined formula I am writing. Combined formula for 1A and 2A, because these are the most popular cases. That's why I'm sticking to 1A and 2A. TC will be equal to W into FB upon MCTC bracket rho S minus rho R upon rho initial. जो भी मेरी इनिशियल डेंसिटी आप दोगे उसके हिसाब से बनेगा ये. And I will trim by head or by stern depending on which case you give me. If you give me case number 1, sea water to river water, initial density C, यहाँ पे आ गया rho S. I will trim by head. If you give me reverse, river water to sea water, Trim by stern. trim by stern. नीचे में R. बाकी सब कुछ सेम रहता है. ये समझ में आ गया जो मैंने अभी बोला. ये 1A and 2A is basically when LCF is less than midship, no sir? Which is mostly the case, which is almost all the time the case. Okay, sir. That's why I'm sticking to 1A, 2A because mostly वही होता है. Mostly our ships are broad based aft, narrow forward.
So now, if I give you a question where you are going from a density 1020 to 1022, which case will you follow? 2A. 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 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. So I'm going from lesser density to a higher density. So case number 2A. Trimming moment will be by Stun. By stern. stern. If trimming moment is by stern, what will be the sign of TA? TA positive, TF negative. Positive. TA positive. TF will be negative. Agreed? Yes, sir. So TA will be positive, right? TA will be positive. Stern जा रहा है. Stern जा रहा है तो TA positive. Head जा रहा है तो TF positive. ठीक है? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. So if I give you a question where a vessel is going from 1005 to 1003, सर ये 1A हो गया. 1A. trimming moment will be by हेड हो जाएगा. head हो जाएगा. TF का sign TF positive, TA TF positive, पॉजिटिव हो जाएगा सर। TF. TA negative. okay, done. Okay. चलो. सर ये 2A जो 2B का जो केस है 2 तो सर ये 1A 1B और 1 जो 2B है सर ये okay. हाँ. ELCF मोर देन मिडशिप है जो हम्म. इसका केस हमें कैसे कैसे आएगा सर ये कैसे कैसे अगर इतने आएगा? केस मतलब हाउ विल यू नो क्योंकि हम लोग से रिवर वाटर से सॉल्ट वाटर में जा रहे हैं हम्म. अपने अभी जो आपने क्वेश्चन दिया वो बाय डेंसिटी दिया सर इससे बाय डेंसिटी भाई आपने कहा कॉमनली जो पीछे का सेक्शन जो है इट इज ब्रॉडर सो इसलिए हमने फर्स्ट केस लिया नहीं, अगर कॉमनली जो अगर 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 मैं 1B and 2B लूंगा तो हाँ सर my center of rotation is forward of midship. यस सर If my center of rotation is forward of midship, my increase in everything will happen forward. वाटर लाइन यस Forward. So therefore, now my B1 will go in that direction, जहाँ पे वो center of rotation है. यस यस सर व्हाट्स द सेंटर ऑफ रोटेशन तो पहले तो पीछे जा रहा था, अब वो आगे जाएगा. So W into BB1 will act उल्टा. It will act उल्टा. Supposing I am doing 1B. बाय 1B बाय में BB जो B1 था वो कहाँ जा रहा था? 1A में पीछे जा रहा था क्योंकि सर पीछे जा एलसीएफ पीछे है उसके पीछे है. तो वो पीछे क्यों जा रहा था? क्योंकि उसका LCF जो था पीछे था. यस अब जब LCF आगे है तो B1 कहाँ जाएगा? एलसीएफ की तरफ जाएगा सर फॉरवर्ड साइड तो आगे से फॉरवर्ड जाएगा. अब जो फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट करेगा वो कहाँ से एक्ट करेगा? सर B1 पे एक्ट करेगा सर विच इज फॉरवर्ड ऑफ मिडशिप.
यस सर। तो वो आगे से उसको ऊपर पुश करेगा। जी सर। अब जो ट्रिमिंग मोमेंट होगी वो कहाँ होगी? डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा सर, पीछे आ जाएगी ट्रिम। उस टर्न हो जाएगी। तो 1B इज टर्न ऑपोजिट ऑफ 1A। ओके सर। सर सिमिलरली मैं पूछा था कि 2B, सर बाय डेंसिटी, सर बाय डेंसिटी हमने इसे 1A और 1B कैसे बोल दिया? एज अ कॉमन शेप के हिसाब से सर ऐसे? नहीं, 1 case number 1A or 1B both are applicable for different ships sailing from Chennai to Haldia. हाँ सर। So there are two ships which sail out from Chennai. One ship is having this, second ship is having this. तो सर मैं तो सिर्फ डेंसिटी आपने क्वेश्चन में दिया था, तो एग्जैक्टली हमने 1A बोला, सबने बोला, उसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन आ गया। 1B भी तो हो सकता था, क्योंकि शिप तो पता नहीं है इट इज फॉरवर्ड एग्जैक्टली और इट इज ऑफ। अगर शेप में मालूम हो इट इज कॉमन शेप तो ठीक है। भाई ऐसा है ना, एक जहाज ये रहा, एक जहाज ये है, और एक जहाज ये रहा। दोनों ही चेन्नई से हल्दिया आ रहे हैं। बोथ आर केस नंबर 1, बोथ आर एट चेन्नई। सो ये ए है, ये बी है। दोनों के दोनों जहाज जो हैं वो ऐसे हैं। ये कील है, ये जी है, ये बी है, ये जी है, ये बी है। When LCF is aft of midship, so इसका जो B1 है वो इधर जाएगा, यस सर। आफ्टर आफ्ट साइड पे जाएगा, आफ्टर बी। आफ्ट ऑफ बी। और जो जिसका LCF फॉरवर्ड है उसका ब्रावो 1 कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड ऑफ बी। तो अब इसकी ट्रिमिंग मोमेंट जो है वो कैसी होगी? बाय हेड हो जाएगी सर, पीछे से इसका पिवट पॉइंट। बिकॉज ये W एक्ट करेगा, ये इसको ऐसे दबाएगा। यस और नो? जी सर। अब इस पे आ जाओ, ये कैसे किधर जाएगा? ऊपर आएगा सर, सीधे से डब्ल्यू ऐड। ये बाय स्टर्न जाएगा। Yes or no? यस। So this is for Chennai to Haldia. This is for Chennai to सर शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि डेंसिटी से इसलिए पता चला क्योंकि जो ए वाले हैं वो अपने हेड वाले हैं केस, जो बी वाले हैं वो स्टर्न वाले केस हैं, तो इसलिए ऐसे पता चला था, ऐसे 2A 1A दिया। नहीं, but 2B में B is by head, 2A is not by head, 2A is by stern. टू वे जस्ट। Yeah. When a ship goes from Haldia to Chennai, then she will trim opposite of this, no? 2A. या तो- करेक्ट सर, करेक्ट। तो ये 1A, ये 1B, now 2A पे आ जाओ।
This will become by stern. 2B पे आ जाओ. Yes. This will become by head. This is what I am trying to say. So case number 1A is the same as case number 2B. Only difference is in case number 2B, there will be a rise, not a sinkage. So the new water line in 2B will be below. So if I want to, that's why I'm not looking only at B. I didn't want to bring B into the picture. I wanted to concentrate only on, I was happy with 1A and 2A. Because अगर मेरा 1A और 2A मेरा एक बारी freeze हो जाता है, then I know 2A and 2B, 1B and 2B are opposite of it. मेरा एक बारी एक चीज को freeze करना चाहता हूं मैं. तो मैं 1A और 2A को freeze कर रहा हूं अभी. Is that okay? So अब 2A पे आ जाओ. I'm going from Haldia, river water, to Chennai, sea water, mean rise. Originally, my G is here, my B is here. If I'm going from this water line, higher water line to lower water line, it is like I am discharging more weight from aft because my ship is more wide-bodied aft. So my Bravo 1 will shift forward and lower. Agreed? Yes or no? Yes, sir. So therefore, my force of buoyancy will now act vertically upward like this, and that will give me a stern moment like this. So my B2 will be here. This will be my triangle. If I magnify this triangle, it will look something like this. B, B1, B2. So 1A is by head, 2A is by stern. बस इतना याद रखो. बाकी सब कुछ उसका ऑपोजिट होने वाला है. Sir, shouldn't B1 be forward and higher than B, sir? हायर कैसे हो सकता है भाई? मैं हायर वाटर लाइन से लोअर वाटर लाइन पे जा रहा हूं. There is going to be a mean rise, not a mean sinkage. I am going from Haldia to Chennai. My mean draft will reduce. So if my mean draft will reduce, my B2 has to go in the downward direction. Correct, जो sir. वाटर प्लेन एरिया वो कम हो जाए तो बी नीचे शिफ्ट हो जाए. तो B नीचे जाएगा और तो B1 कहां जाएगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन जहां से मैं ज्यादा डिस्चार्ज कर रहा हूं. Yes or no? ये वाला ट्राइंगल ऐसे बन रहा है. ये B2 है.
ये वाला ट्राइंगल ऐसे बन रहा है. Just remember 1A and 2A. That's all I want you to remember. Nothing else. Okay. Now I'm coming on to one more element. I'm sticking to 1A, 2A. Please remember 1A, 2A पे अटके रहेंगे हम. Mean sinkage or rise का formula. I am combining one formula W upon TPC rho S minus rho R upon rho initial. One standard formula for both 1A and 2A and 1B and 2B also. Notice everything in the bracket is the same as the previous formula bracket. W is the displacement of the vessel. TPC, higher density, lower density, initial density. This will take care of all your densities, whichever you are going from one to the other. So if you are going from 1015 to 1010, rho will be 1015 सर इनिशियल ना. initial. बिल्कुल ठीक. If I give you a question, okay, now another question. We know TPC and MCTC, they change with density. TPC and MCTC, they change with density. We know that. Which TPC and MCTC will you use in this case? So if you are going for case number 1, We have to use the changed one, no sir. so if you are going from Chennai to Haldia, which TPC will you use? Sir, Haldia. Which Sir, MCTC will arrival. you use? The arrival final density. The final density, final condition, MCTC and TPC. Do you all agree on this? Yes, sir. Yes sir, because TPC changed. So TPC and MCTC is always for the final condition. So please remember this. TPC and MCTC will always be for the final condition. All right. TPC and MCTC is always for the final condition. All right. Hanji, now doubts. Okay. So let's take a question. Take one सर numerical. ये मीन राइज और मीन सिंकेज है जो ये सर कल बताया था सर अपने डॉक वाटर अलाउंस का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें.
Good, very good. I'm glad you asked this question. So fresh water allowance का क्या फॉर्मूला है? WF40 W upon 40 TPC. और डॉक वाटर अलाउंस का क्या फॉर्मूला है? सर Fresh water allowance difference in density divided by 0.025. सो डिनोमिनेटर में मेरा आ गया 40 इंटू 0.025. यस सर। कैलकुलेटर में डालो. वन आया, वन गायब हो गया. हाँ जी। ठीक है, गायब कर दिया उसको. तो फॉर्मूले को कंबाइन कर दिया और ये फॉर्मूला बना दिया. है ना आसान? Yes sir. तो वन फॉर्मूला, इट विल टेक केयर ऑफ एनी डेंसिटी. अब मेरे को कोई चिंता नहीं है कि कहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ. उसमें तो मेरा लिमिटेशन था, बट यहाँ पे मेरे को कोई चिंता ही नहीं है. अब मैं कहीं से कहीं भी चले जाऊँ, मुझे कोई क्वेश्चन दे दे 10 डेंसिटी से 12 पे जा रहा हूँ, मैं कौन सा यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, वो सब मुझे पता करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. सो दैट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है. सो ये हमारा स्टैंडर्ड बन जाएगा अब. ठीक है, इज दैट ओके? सर ये जो सर वो फार्मूले में लिखा है सर हमने रो एस माइनस रो आर सिंकेज वाले फार्मूले में, तो रो आर विल बी सर फाइनल डेंसिटी रहेगी इसमें भी? नहीं, नहीं. रो एस इज द हायर डेंसिटी, सर रो आर इज द लोअर डेंसिटी. विद लोअर. राइट. अगर मेरे को मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 15 से जा रहा है 17 पे, तो ओके सर. राइट, तो विच इज द हायर वन? 17. 17 तो 17 माइनस 15 कर देंगे. 15 ठीक है, डिवाइड बाय अपॉन 15. डिवाइडेड बाय 15. 15. गॉट इट? ओके सर. यस यस. सो फंडे क्लियर रखो बस. ये जो क्वेश्चन दिया है हायर माइनस लोअर, सर अगर 17 से 15 में जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर विल बी 17 ना सर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. हाँ ओके सर. इनिशियल 17 है. सर Is that ये भी okay? सर ये भी सर एक टाइप का डॉक वाटर अलाउंस ही, मतलब कुछ होना था, मतलब अपना चेंज इन ड्राफ्ट हुआ ना ये एक, मतलब बेसिकली ये आपका BB2 आ गया. तो जो वर्टिकल हाइट थी ना सर भाई, ये वो जो वर्टिकल थी ना, ओके सर. ये आपका BB2 आ गया. Is that okay? Sir, if we put the value of freshwater allowance in dock water allowance formula, it comes 40 into 0.025 and becomes 1. So there is only change in density in the numerator, but the rho initial in denominator वो नहीं रहता उसमें. वो उसमें नहीं रहता. बिल्कुल ठीक. सो उस फॉर्मूले में एक ना इसलिए हिंशिप में हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करते. इफ यू रिमेंबर, हिंशिप के क्वेश्चंस में वी डोंट यूज इट. वी यूज द डिस्प्लेसमेंट टेक्निक एंड वी डू द इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना. वी डोंट यूज दैट फॉर्मूला. सो क्यों? क्योंकि टीपीसी कौन सा यूज करना है उस फॉर्मूले में? जो एफडब्ल्यूए में W/40 TPC है. Which TPC do you use in freshwater allowance?
सर सी वाटर वाली। करेक्ट, उसमें सी वाटर वाली यूज होती है, राइट? दैट मीन्स that formula holds good so long as my TPC is of salt water, but I am not going to salt water. मैं तो कहीं और जा रहा हूं, मैं तो 10 पे जा रहा हूं, सपोजिंग फाइनल, मेरी फाइनल डेंसिटी 10 है, शुड आई बी यूजिंग 10 देयर? तो इसलिए उसकी वो करेक्शन जो लगती है उसको हमने इनकॉर्पोरेट करके ये डाला हुआ है नीचे में। इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डायरेक्शन। जस्ट रिमेंबर द ब्रैकेट इज द सेम, so that you should be able to remember the formula.